Okay, good morning students. I am Sushil Kumar Rathore, Assistant Professor at Calicut Unitary University. Today we will discuss about the remaining part of the respiratory system, where we will discuss about the different respiratory volumes and disorder related with respiratory system, and remaining the respiratory system or the respiratory organs in different animals. Okay, so let's see what are the first respiratory volumes and capacities. Okay, so what happen actually whenever we do respire, we do not expire the air completely, or we do not empty our lungs completely empty, or when we inspire, we do not completely fill our lungs completely. So we are unable to in a normal respiration, in a normal inhalation or exhalation, we are unable to completely fill up or completely empty the lungs. So in the meantime, so whatever the space remains and whatever the volume remains, so accordingly there are different parameters, there are different terminology that defines different types of airs, different types of volumes, which can be described here like the tidal volume. First, it is the volume which is inspired or expired, okay, in each normal breath. So a normal breath where the amount of air which is either expired or inspired, okay, inhaled or exhaled, that is called as the tidal volume. That we can say it's a normal thing. That is around 500 ml of air is exchanged, or you can say 5 ml of air is taken or given outside. That is the thing. Second is vital capacity. It is the maximum amount of inspired air after forceful expiration, or vice versa. Means it is the whenever you expire, you normal expiration, but you forcefully expire more. Means if you normal respiration occurs, you exhale and again you try to expire more amount of air, then you take a normal breath, the maximum amount of air you take inside after expiration, or you after complete forceful inspiration you expire whatever you exhale out amount. That is called as the vital capacity. That is the 4500 ml. So think how much extra the body, the lungs can take. Around 3000 around 4000 ml extra it can take. Okay, next is complementary air volume, which is also represented as in the short form CV. So it is maximum air inspired after normal inspiration. Okay, so it is the maximum air inspired after normal inspiration. After normal inspiration, the maximum amount of air you can inspire. Okay, so that is the additional, you can say. So normally whatever you breathe, then you extra amount of air what you take is the complementary air volume. This is also called as inspiratory reserve volume, IRV. Okay, on this is around 2500 to 3000 ml. Okay, then supplementary air volume. Supplementary air volume, maximum air volume, the maximum amount of air volume which is expelled or exhaled outside after normal expiration. So if you have in normal breath you have exhaled, but you try to exhale more amount of air, so the extra effort you give, an extra amount of air you release, that is the expiratory reserve volume, or also called as supplementary air volume. Okay, ठीक अच्छे. तो एटा को हमें ओरिया माने एटा को शॉर्टकट रे हमें ERV बोली भी कहि परिबा. The amount is 1000 to 1100 ml. Last is this one, residual volume, RV. What is residual volume? Residual volume is the air left after forceful expiration. Even after you expire, even after you जते भी तमें चेष्टा करी कि भी जते भी माने एक्सपिरेशन रे एक्सहेलेशन रे जते भी अमाउंट रो एयर दे देला परे भी जहाँ भी रही जीवो, that is called as the residual volume. ना जना पड़े रेसिडुअल माने जहाँ बंची थी. सो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन जहाँ भी रहा, दैट इज द
residual volume RV, which is around 1200 ml. Okay. Next is inspiratory capacity. Inspiratory capacity, that means IC. In short, we say IC. It is the total amount of air inspired after normal expiration. Okay. So it is the total amount of air inspired, mane total air inspire karibo normal mane after normal expiration. Okay. Only. So sete bade kon tidal volume re kon thila, either you exhale or you inhale. Okay, but 8 kon hochi total amount of inspired after normal expiration. Normal expiration pare jota nabo, that is the inspiratory capacity. So that is tidal plus IRV, mane inspiratory eta jo thila air inspired after normal inspiration. तो एटा को मिसे की IRV और TD मिसे की ही जहाँ जितने की होची, that is around 500 plus 3000 equal to 3500 ml. Okay, so these are the some volumes, and last one is no, we have another, yes, functional residual capacity, FRC. FRC is what? Amount of air left after normal expiration. Normal expiration, forced expiration thila seta residual thila. Eta hela amount of air left. The amount of air kete bonchila after normal expiration. Normal exhalation or expiration pare jaha rahila, that is called as the functional residual capacity. So this is RV, residual volume, plus ERV, the reserve volume. Okay, so 1500 plus 1000 both is equal to 2500. Now dead space air. Dead space air is what? It is the volume of air filled or remained in the trachea or the bronchioles. Mane even after expiration, some of the air is present inside the, जेमती आमे जानिछु पानी आमे कोन जते पानी गोटे टांकी रु आ गोटे जगह को पानी दउछु, ताले पाइप दे की जाउची. सो पाइप देला परे गोटे टांकीटा भरी जिवो, बट टांकीटा भरी जिवो आउट से जो टैंक अच्छी सेटा भी सेति कमी जिवो, बट यू सी जते की कमी थिबो सेटा टांकी रे सेति की आसी नथिबो, काहे कि ना पाइप रे किछि वाटरटा रहि जाइथिबो. ओके, सो दैट इज लाइक द डेड स्पेस. सो डेड स्पेस एयर, तो जते की एयर बाहरु निया हेछि कि भितर जाइछि सेटा को मझिरे हमरो ट्रैकिया ब्रोंकियल्स जहा रहि जाउछि, दे कंटेन्स द एयर रिमेनिंग amount of air, that is called as dead space air. काहे कि सेटा किछि यूज हे पारे नि. ओके, सो डेड स्पेस एयर, सो नेक्स्ट एक्सपिरेशन रे सेटा यूज हे पारे जते बेडे फोर्स ये हुए. ओके, सो दैट इज अराउंड 150 ml. ओके, coming to total lung capacity, that is called TLC. So it is the maximum air which the lung can hold. माने lung केते होल्ड करि पारे, केते रखि पारिबो. ओके, इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन गोटे गभीर गोटे इनहेलेशन टाइम रे केते अमाउंट मैक्सिमम नहीं पारिबो, दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज अराउंड 6000 ml, which is reserve volume, ERV, that is expiratory reserve volume, TV, tidal, then IRV, or you can say vital capacity plus residual volume. ठीक अछि. Lastly, the expiratory capacity or EC. It is the air amount which can be expired after inspiration, normal inspiration. Okay, जोटा कि आम फर्स्ट एटी थिला inspiratory capacity just opposite टा. ठीक अछि. Expiratory capacity, air amount which can be expired after a normal inspiration. So this is around, this is TD plus ERV. ठीक अछि. So these are all the terminology we should be very acquainted with when we are studying about the respiratory system in human body. So these are the some tidal the respiratory volumes and the various terminology. Now coming to next section is we will discuss about the disorder of the respiratory system. Okay, disorder of the respiratory system. So disorder we can say, or disease we can say. Okay, so there are various types of disease. So basically we can we have discussed in our earlier classes when what I have taken in health and diseases. So diseases generally we can categorize them in infectious or non-infectious. So we are not going to discuss here infectious, because some of the infectious diseases we have covered, like swine flu, like cold, like common cold, like flu, influenza, or TB, pneumonia. All these things we have covered. But here we will discuss some of the
some of the non-communicable diseases which generally happens through the contact of the air, polluted air or smoke or dust particles. We will discuss with that. Okay, so we will restrict ourselves with the non-communicable diseases here. So generally this is the chart, you can say, where we can see different types of diseases, and we will possibly we will cover some of the terms, right? So first is asthma. Okay, first asthma. Asthma is nothing but the excessive secretion or secretion of the mucus in the tracheal wall, right? So mucus present अछि amaro tracheal ye re. So से mucus lining अछि तार काम होछि air trap करिबा आउ bacterial कि जहाँ भी infection थिबो कि कोन dust particle थिबो ताको air trap करिबो ताको remove करिबो. But जदि बेसी amount रो जदि remove माने secretion हबो ताले कोन हबो सब blocking हे जाय. Okay, so that relates that causes what asthmatic माने blocking हेला परे mucus हेला परे से रास्ताटा pro block हे जबो आउ air passage होबा पई कष्ट होबो जोति पई निश्वास कि कौन से ब्रेथिंग करने पाई माने डिफिकल्ट है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ. सो दैट इज द सिचुएशन एस्थमा. लंग कैंसर, you know that lung cancer can happen. So lung cancer is one of the disease, like it can happen because of the smoking and some other conditions, some air pollutants. Okay, then pneumonia, you know pneumonia last class माने previously disease में भी माने discussion health and disease discussion करते ले. But what happens in the pneumonia, the air sac is filled up with the fluid like substance or fluid cover हे जाए माने liquid type रो जिनस रो सेटा पूरा fill up हे जाए. तो सेति पई air exchange हुए नहीं आउ ऑक्सीजन completely exchange ही पारे नहीं, जोति पई बहुत प्रॉब्लम हुए, डेथ रो भी संभावना बढ़ी जाए. Next होजे pulmonary edema. This is the edema is the swelling. So in the pulmonary region, means in the alveolus, there will be the swelling type of thing, where you will see here, you can see that the no fluid bulbs filled up in lungs, but here it will filled up. Because of this filling up of the fluid, what will happen, this will swell माने extra ताको actually कौन से air होची, air रहिबा दरकार अछि alveoli रे, but सेठी पानी माने fluid type रो जिनस सदी जदी भर्ती हे गला ताहले एटा space तार बड़े जीवो आ फुली जीवो. So that is called as pulmonary edema. Now emphysema. Emphysema is the destruction and enlargement of the air spaces. माने air space जो अछि सेटा माने alveolus रे जो space अछि bulb हे कि that will be destructed. तो सही situation में कौन होची माने पूरा तारो जो बढ़िया बहुत highly, because this is lobular, the lungs is lobular because to increase the surface area to exchange the carbon dioxide or oxygen gases exchange पे surface area बेसी दरकार अछि, सेति पे air sacs हेगी अछि. But if that air sacs are destroyed, so there will be a problem in the exchange of the gases. So that is the case here. In emphysema, what happens, the air spaces are destroyed. Okay, then atelectasis, then tuberculosis, then pleurisy. In pleurisy, the pleural cavity will be filled with pleural fluid. Pulmonary embolism. Embolism is nothing but the clotting of the blood vessels which is connecting or reaching the lungs. So lungs से जो artery की जो veins जाइची सेटा जदि clot है गला सेठी, then it will cause pulmonary embolism. And because of that, what will happen, properly air माने lungs को air माने कौन blood जीवनी आउ exchange माने of gas will not happen. Then bronchitis. Bronchitis is also inflammation which happens in the bronchi, and inflammation जो कौन you can see here the healthy, you can see here the healthy one have okay, you can see here healthy one have a wider lumen, but the unhealthy one or the which is suffering from bronchitis, you can see the mucus, because of the mucus secretion and because of the inflammation, what happens, this lumen has decreased. This you can see the size is very
reduced. So because of that, what will happen again, there will be again difficulty in proper passage of air, and the person will feel shortness of breath. Okay, sorry. Okay, now we'll see disorder of the respiratory system. मु फर्स्ट चार्ट रे किसी जिंस कहली एबे भी आउ कि जिंस हम डिस्कशन करबे लाइक ब्रोंकियल एस्थमा. ब्रोंकियल एस्थमा कौन होची? एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन. ओके, एस्थमा रे कौन होची? ब्रोंकियल रीजन रे जदी हैला, दिस इज द एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स. ओके, व्हिच व्हाट डज ब्लॉक्स द पैसेज एंड कॉज व्हीजिंग. व्हीजिंग माने जते बडे निश्वास छाड़िबो जणे मनीष तो तार साउंड हम सु माने सु नहीं माने टिके गड़गड़ी हाई के साउंड हम व्हीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज व्हीजिंग. ओके, एंड डिकम्प्रेशन सिकनेस, दिस इज वेरी सीन कॉमन सीन इन द पर्सन हु आर डीप माने हु आर डाइवर्स, माने जो समुद्र रे जो माने डाइविंग करंती, डीप डाइविंग करंती, से माने तळ को जते बेले जिवे तो कोन होची बहुत प्रेशर कमी जाए. तापरे से माने तांको संगे जो गैस माने एयर नहीं की जाई थांती, एयर बैग माने जो नहीं की जाई थांती सेत्री बे सब मिक्स हे की एयर थाए. तो जिते बड़े सडनली से मैंने ऊपर को आसबे, व्हाट हैपेंस, द नाइट्रोजन बबल्स डेवलप हुए बॉडी फ्लूइड रे. नाइट्रोजन डेवलप हैला पर कौन हो जाए, सेटा बबल्स जो बहुत पेन हुए, बहुत हाथ गोड़ पेन हुए, एंड पैरालिसिस भी हो जाए, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हुए. सो दैट्स ऑल द सिम्टम इज कॉल्ड एज द डिकम्प्रेशन सिकनेस और ऑल्सो नॉन एज काइजन डिजीज और डाइवर्स पैरालिसिस. ओके, नाउ डेथ रेटल. दिस इज इरेगुलर ब्रीदिंग स्टार्टिंग विथ शैलो ब्रेथ, माने इरेगुलर ब्रीदिंग होती जोटा कि शैलो ब्रीदिंग माने कम ब्रीदिंग आरंभ हो, जोटा कि धीरे धीरे तार डेप्थ आउ स्पीड माने निश्वास प्रश्वास धीरे धीरे बढ़ी धीरे धीरे जोर जोरे बढ़ सेमती टाइप दैट हैपेंस बिफोर, जनरली हैपेंस बिफोर द डेथ इन केस ऑफ कार्डियक और किडनी और सेरेब्रल डिजीजेस जोटा कि देखा जाए. सो दैट इज कॉल्ड एज द डेथ रेटल. नेक्स्ट इज एम्फीजेमा. This is long-term irritation by air pollution. Long-term air pollution exposure हेले कि smoking of cigarette smoking smoker जो माने थांती तांकर बारंबार smoke जब जाउची, industrial dust जदि बारंबार जाउची ताहे कौन होबो, lung loses its elasticity. lungs रो गोटे capacity अछि, आमे पढिले elasticity अछि, से जदि full functional जदि capacity रे जदि नहीं पारिबनी, then we say that it has lost its capacity. So because of that what happens, माने तारो elasticity माने मु कहली destruction हो जाए alveolus रो, so it will lose its elasticity and decrease the surface area. वही कही देले, तो surface area जो decrease हो जाए तो सेति पई आउ exchange हो पारेनी. That situation is called as emphysema. Pleurisy, inflammation of the pleura. Pleura जो cavity अछि जो थी हमरो जो lungs अछि, lungs is covered by the pleural cavity or the pleura, the layer. There the inflammation occurs, and because of the inflammation there is secretion of fluids, and this covers the lungs, that causes problems. Okay, so these are the some of the common disorder. Now coming to the occupational disorder, this is interesting to know. So because of some occupation the persons are at the risk of developing some sort of diseases. Okay, so occupational asthma. So asthma, what you understood about bronchial asthma, same is in case of occupational asthma. Means जने जदि कोनोसी फैक्ट्री रे काम करछि, कोनोसी काम पर्टिकुलर टाइप रो काम करछि, सेही जोगु जदि तारो लंग्स रो कैपेसिटी कम हे गला कि तारो डिस्ट्रक्शन हे गला, then we called it as a occupational asthma. Pneumoconiosis, this is a group of condition. Okay, this is a group of condition. This is resulted because of the deposition of the minerals dust in the lungs and the subsequent lung tissue reaction to the dust. माने एटा होची कोन जते मिनरल डिपोजिट्स जदि होची माने जोटा कि बेसिकली माने माइनिंग एरिया ए सब जगह रे जो माने थांती जोटी काम करंती तांको बेसी ए सब जिंस माने ए कंडीशन रे देखा हुए. So this is the deposition of mineral dust which is माने lungs रे deposit होबो, and धीरे धीरे कौन हम टिश्यू रिएक्शन है कि बॉडी रे
माने डस्ट करिवो आउ डस्ट को रिएक्ट करिकी बॉडी रिएक्शन करिवो आउ बॉडी इम्यूनोलॉजिकली बहुत अलग अलग रिएक्शन करिवो जोटा कि प्रॉब्लम करे. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज न्यूमोकोनियोसिस. सो न्यूमोकोनियोसिस रे दुईटा आम जिनस देखा तीन देखा. फर्स्ट हूँ सिलिकोसिस. सिलिकोसिस कौन होची? इट इज द क्रॉनिक इट इज ड्यू टू द सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका इन क्रिस्टल फॉर्म विथ द क्रॉनिक एक्सपोजर माने बहुत लंबा टाइम पाई एक्सपोजर जदि हेची. सो केमिति हबो? जणे जदि काम करूची बहुत दिन जाए माने फैक्ट्री रे काम करूची कौन सी सिलिका जो इंडस्ट्रियल तैयारी होची कि जोठी होची से जगह रे तांकर एक्सपोजर बेसी हुए. तो तीनटा फेज रही पारे. इट मे बी इन द क्रॉनिक फेज और सब एक्यूट और एक्यूट. क्रॉनिक माने इट विल टेक अराउंड 10 years 8 to 10 years, okay, even up to 5 to 10 years. Subacute will less than 5 to 3 to 4 years or 5-7 years, but acute within a month. माने गोटे मास भितर जदि गोटे पेशेंट माने गोटे लोक जाइछि फैक्ट्री काम करछि कि कोनसी एनवायरनमेंट रे काम करछि विदिन 1 month जदि सही डेवलप कर देला ए सब सिचुएशन सिलिकोसिस, देन वी कॉल इट एज अ एक्यूट सिलिकोसिस. कहीं ना सेठी बहुत हेवी अमाउंट रो डस्ट पार्टिकल से इनहेल करिछि. जदि अमाउंट बहुत धीरे धीरे कम कम थी देन इट विल गो टू सब एक्यूट लेवल. अब बहुत कम थी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन जदि होगला 10 वर्ष होगला कि 8 वर्ष होगला देन इट गो फॉर द chronic silicosis. Okay, so 3 different types of silicosis you can see because as per the exposure and as per the amount of dust intaken. Asbestosis same in as in case of the silicosis, acute भी हुए, subacute भी हुए, chronic भी हुए. So this is also a major माने occupational health hazard where the asbestos mining or milling, manufacturing, installation of the insulation, ships, buildings जोटी हुए सेठी यही सब जिनस देखा जाए. ओके, एस्बेस्टोसिस. आउ गोटे हूँ कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस. कोल वर्क माने एटा आम तो ओडिशा रे आम जानिछु माने कोयर केते रिजर्व जो जगह रे कोल रिजर्व अछि तो तंकर ओपन कास्ट माइन भी अछि, अंडरग्राउंड भी माइन अछि. सो ओपन कास्ट माइन रे सो माने ड्रिल करिवे. अभी तो डायनामाइट भी होची बट किसी किसी क्रिटिकल जगह को ड्रिल करने पड़े. ड्रिल करने पड़े कि अंडरग्राउंड जावाई पड़े. अंडरग्राउंड गले भी सेठी बारंबार ब्लास्टिंग हुए कि ड्रिलिंग करने पड़े. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सब्जेक्टेड टू हेवी अमाउंट ऑफ कोल डस्ट. सो द माइनर्स हु वर्क एट द कोल फेस अंडरग्राउंड माइनिंग ड्रिलर सरफेस माइनिंग आर ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिस डिजीज बिकॉज बारंबार डस्ट बहुत exposure हुए. Even if they keep the mask with them, there is the chances that they will also inhale. Okay, so who have spent fewer than 20 years underground, जो माने underground काम करती 20 years जाए थांती तांको ए सिचुएशन रे देखा जाए जोटा कि कहा जाउची कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस. Okay, so this is the situation of emphysema. You can see here this is the normal one. Here normal bronchial and bronchi space अच्छी बट ये देखो alveolar affected by emphysema तांकर space नहीं ये आउ तांकर separation नहीं आउ surface area कमी जाए से exchange होगा पाई बहुत chances कमी जाए. एस्थमा रे ये देखो ये होची alveoli अच्छी ये bronchus अच्छी bronchial ये space अच्छी माने तमरो lumen अच्छी air passage होगा पाई sufficient अच्छी because the lumen जदि पूरा ठीक ठाक अच्छी ताहले sufficient amount of oxygen जाई पारिबो sufficient air आसी पारिबो और sufficient amount of air जदि आसीबो ताहले oxygen भी आसीबो. oxygen आसिले आराम रे exchange हेई पारिबो माने gases exchange हेई पारिबो. but जदि swelling हेई गला mucus secretion हेई गला ताहले the bronchioles will be narrowed और narrow हेला जो कोन हबो air बहुत कम amount रो जीवो और exchange एयर एक्सचेंज करने माने ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने भी बहुत कम स्कोप मिलिबो. सो द पर्सन विल सफर फ्रॉम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. सो दीज आर द सम ऑफ द डिजीजेस. ओके, नाउ कमिंग टू द रेस्पिरेटरी organs in animals. This is another section. Okay, so in this we will discuss about the different type of respiratory organs in animals. So what happens, how animal actually respire. There are basically the organ in animals, generally there are 4 different organs through which animals respire. Okay, what is that? First is body surface, the skin, or the, you can say not the skin, basically you can see the body surface means the whole body, like in case of small organism like invertebrates like protozoa and some poriferans, coelenterate, echinoderms.
these are the animals which what they do, they directly take the oxygen from their normal body surface and give out the carbon dioxide to the outside. Skin or integumentary or integument, skin माने आमर स्किन होची कि इंटीग्यूमेंट होची सेठी भी एक्सचेंज हुए माने सेठू भी रेस्पिरेशन हुए. तो बेले बेले कौन होची स्किन बहुत थिन थाए आमर जेमती है अच्छी आमर सेमती हम ना बहुत स्किन बहुत थिन थाए स्किन तले ही ब्लड वेसल्स थाए जो आउ स्किन टा मॉइस्ट होगी थाए सो ये इजिली तांकर गैस एक्सचेंज हो पारे जोटा कि देखा जाए बेसिकली एनालिड्स रे लाइक लीच एंड अर्थवर्म तुम देखीदेव कहीं लीच को छुईब कि देखिए तार स्किनटा लुसलिसिया होगी माने गोटे माने म्यूकस स्लीपरी टाइप रो थाए. सिमिलरली तुमर माने लीच तापर अर्थवर्म रो भी थाए तापर फ्रॉग रो भी तुम देखिए जोटा कि पानी रे रोचे फ्रॉग ते भी तार बॉडी भी स्लीपरी थाए. सो दे ऑल हैव डेवलप्ड respiration developed system for the respiration through their skin. So body surface can be also used as a respiratory organ and skin can also be used as a respiratory organ. Okay, and trachea is another type of system which is seen in case of elaborated in case of insects. So insect मानकर तुम ट्रैकिया सिस्टम देखी पारे जो पूरा माने आमर कौन हो ट्रैकिया अच्छी ब्रोंकियल्स अच्छी आमर लंग्स अच्छी बट दे हैव ओनली ट्रैकिया माने खाली माने पैसेज ऑफ रूट्स एंड ट्रैकिया ब्रांचिंग एमती होगी वी विल डिस्कस दैट. नेक्स्ट हो गिल्स हो this type of special organ is present in higher arthropods and mollusca and also fish. तो किसी जिनस माने हायर आर्थ्रोपोड्स अच्छी मॉलस्का भी अच्छी फिश रे भी देखा जाए. नेक्स्ट होची लंग्स. सो लंग्स तो आमे जानिछु लैंड एनिमल्स रे थाए. सो दिस वी विल सी वन बाय वन. ओके, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हे गला. नाउ थ्रू दिस because of this there are different type of respiration. So we'll see different types of respiration. So basically all the respiration can be categorized in 4 different way. Okay, one is cutaneous respiration, another is tracheal respiration, and another one is bronchial and pulmonary respiration. Okay, so we'll see one by one. Cutaneous respiration. Cutaneous respiration ne to मैं कहली कि what happens here, you see I have just given you one example. Is this is the frog. You skin of the, you take the example of frog I have given here picture, but you can imagine about a earthworm. माने earthworm रो भी तुम चिंता करि पारिबो. earthworm अछि, लीच अछि सपोज, तो तांकर कोन होछि एठी एपिडर्मिस रहिला. ओके, ता तळे एठी एपिडर्मिस रहिला तापर ता तळे तार आ गोटे लेयर रहिला. बट हियर यू सी द ब्लड वेसल्स एठी कैपिलरीज है कि अछि. ओके, सो एठी ही तार just you see the blood vessels are just below the epidermis and this is moist. So moist the आमे भी पढिछु आमे जानिछु आगुरु कि गोटे रेस्पिरेशन करिया पय गोटे सरफेस एरिया दरकार अछि. सरफेस एरिया को बहुत थिन होबा दरकार. इट शुड बी हाईली vascularized माने कैपिलरी सिस्टम ब्लड vascular सिस्टम पूरा भलरे सेठी माने पूरा जाय कि माने सब एरिया रे जाय कि पेनिट्रेशन करिथिबो. ओके, so it should be thin, it should be highly vascularized and it should be moist. So vascularized अच्छी कहीं blood vessels रहिला तापर गोटे thin layer रहिला. But again the moisture, so moisture भी retain करिया पई तार skin रो structure सेमती अच्छी so that mucus भी टिके secrete हो जाइथिबो टिके moisture content करिवो सेति पई टिके wet हेकी थिबो. And because of that what happens, this oxygen can dissolve through this and pass through this and oxygen pass हो जिवो और carbon dioxide बाहर को जिवो. And we know oxygen and carbon dioxide are exchanged by their normal process of diffusion. कहीं कि oxygen बाहर बेसी अच्छी और body रे कम अच्छी, so oxygen will definitely go into inside and carbon dioxide is higher inside and outside is lower, so it will be expelled outside. So this way the cutaneous respiration is done or performed by the animals like frog, leech, earthworm, all these things. Okay, so this is about the cutaneous respiration. Now coming to tracheal respiration. So in tracheal respiration what you see,
this is seen in case of basically this is one of the you can say most developed and better identified in case of insect. So here you see the insect, and they have a very well developed tracheal system, and it is beautifully been understood in case of the normal cockroach we see, that is Periplaneta. Okay, so here you see in the side view you can see the structure. Here the blue is the tracheal system. Here you see the dots, bulbs like things. These are the spiracles which is present outside. माने गोटे एटा होची माने इंसेक्ट तार साइड रे माने गोटे कणा कणा हे कि थाए स्पाइरकल्स. ओके, माने कणा हे कि थाए, पेयर कणा हे कि थाए, माने ऊपरे तळे कणा हे कि थाए. एटा गोटे गोटे कणा, से कणा रु कोन थाए गोटे पाइप टाइप रो नगर ट्यूब माने ट्यूबुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर थाए. इट विल गो टू हियर, दिस विल सब जिनस जाय कि गोटे कॉमन ट्रैकेल सिस्टम को जाय कि जीवो आ सेट होई तार धीरे धीरे सब सेल को जाय कि से माने एयर कि ऑक्सीजन सप्लाई करे पाई दबो. सो दिस इज द वेल डेवलप्ड ट्रैकेल सिस्टम. एठी तमे देखि पारिबा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. एठी टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच. एठी तार हेड अछि. हियर यू सी व्हाट द थिंग्स. एठी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एमती है कि अछि. सो ए सब जिंस जोटा देखा जाउछि एटा होछि सब तार स्पाइरकल्स. ओके, सो स्पाइरकल्स सब बाहर जाए सब स्पाइरकल्स गोटे जगह को जीव. एठी से माने जोड़िबे सब गोटे पाइप जमती आमर गोटे गोटे सब लाइन रे जोड़ी थाए, माने गोटे गोटे कनेक्शन टाइप रो. सो एठी जोड़िला एठी जोड़िबो सब. ओके, जोड़िला परे यू कैन सी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकेल ट्रंक. ट्रैकेल ट्रंक रे जोड़िबा. ट्रैकेल ट्रंक टू नहीं कि ट्रांसवर्स कमिशन को जीव. ट्रांसवर्स कमिशन नहीं कि जोड़िबो एठी तमरो नेक्स्ट एट वर्टिकल जोटा होची हमरो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकेल ट्रंक रे. तापर ट्रैकेल ट्रंक नहीं कि सब पुणी नेक्स्ट एटू सब क्रॉस करके सब थोरासिक स्पाइरकल्स ए सब को अलग अलग जगह को से ट्रांसमिट करिवो. सो इक्वल हाफ एठी भी सेतिकी अछि, एठी भी सेतिकी अछि. तो बाहरु स्पाइरकल्स परे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकेल ट्रंक, देन ट्रांसवर्स कमिशर, देन वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकेल ट्रंक. एमती है कि से ट्रांसफर करे. तो दिस वे a very fine network of trachea is present in case of insect, which help them to perform their respiration, tracheal respiration. Okay, then branchial respiration. So branchial respiration कहे माने होची this type of branchial respiration माने either it will through gills. Okay, so gills रो भी अलगा अलगा variety होची, टिके difference होची. So like in case of neris रे parapodia थाए जोटा कि branchial respiration help करे. I will show you. Then branchial tuft in sabella, and dermal branchi in echinoderms, and tracheal gills in nymph of dragonfly. Dragonfly रो भी गोटे tracheal gills थाए. Gills of crustaceans मानकर भी थाए, and aquatic insects मानकर भी थाए. Okay, so एथरे सबु असले. Then in addition to that we have gills of the fish, special, that is the very common because, right? So ए माने भी अछंती. एटा होची अनकॉमन और कॉमनली तो भी आमे जाने छु कि फिश मानकर भी थाए गिल्स. सो फिश मानकर भी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हुए. सो अनदर थिंग इज अबाउट द गिल्स इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल गिल्स. एक्सटर्नल गिल्स माने तांकर किछि माने कवरिंग नाही, किछि बाहर कवरिंग नाही. लाइक इन आवर फिश रे कोन थाए हमर बोनीफिश रे अपरकुलम थाए. सो सेति को ताकू कहा जाय इंटरनल गिल्स, और जहार अपरकुलम की बाहर कवरिंग नाही सेटा कहा जाय एक्सटर्नल गिल्स. ओके, सो हियर यू सी रेस्पिरेशन इन एटा को परे देखिबा. बिफोर दैट वी लेट्स सी अबाउट द नेरिस. नेरिस रो तुम गोटे स्ट्रक्चर देखि पारुछ. तार एटा होची सिटी. ओके, माने सिंगल इज सिटा बट प्लूरल द टर्म इज सिटी. माने तार जो नख माने जो माने माने कौन कह द टेपरिंग लास्ट पॉइंट ऑफ द पैरापोडिया इज द सिटी. ओके, टर्मिनल पॉइंट, एंड द ऑर्गन द बिलो सिटी इज द पैरापोडिया. पैरापोडिया माने तार माने पोडिया मीन्स व्हाट? पोडियस मीन्स द फुट. सो साइड फुट्स यू कैन से. तो पैरापोडिया. सो तांकर फुट्स जो अच्छी तार ऊपर जो अच्छी सेटा सीटा रहला, जब फुट रे ही तांकर
से माने रेस्पिरेशन करेंगे केमती अच्छी स्ट्रक्चर लाइक दिस टिके ब्लर हो जाए बट यू सी हियर दे हैव दिस स्ट्रक्चर्स this help them to total structure help them to perform their bronchial respiration. So this is the parapodia. Okay, not it clear dekha jauni but this you can understand that this structure parapodia total also help gives they have a structural arrangement and special features that helps or that allow them to perform their respiration. Okay, so parapodia is one of the modified, you can say modified gills which help in respiration of respiration of neris. Okay, then we'll see this later. Then coming to the respiration in cartilaginous fish. So cartilaginous fish manakar gills achi, so cartilage fish manakar tika alga achi au bony fish manakar alga achi. So here you see there are 4 to 5 1 to 5 external gill slits are there. So gill slits अच्छी तार cover नहीं but okay तांकर cover न था आउ से gill slits रू भितर को जीवा gill slits भितर गला परे तांकर interbronchial septum अच्छी माने गोटे pouch भितरे अच्छी they have all different slits माने गोटे same the what you say spiracles in insects, here we can say slits in case of gill. So गोटे slits अच्छी आउ गोटे स्लिट्स पर नेक्स्ट स्लिट्स को डिफरेंस करने गोटे सेप्टम अच्छी गोटे रास्ता अच्छी गोटे माने कांथ टाइप रो अच्छी. ओके, सेप्टम माने तार सेपरेशन. ओके, सो हियर each one is the slit and what you see here is the septum. Okay, this one, all this one is septum. Okay, here you see these are the slits. Okay, and this one is the septum. This one is the septum. Okay, so this is interbronchial septum. These are the slits. From the slit the water passes through and they take inside and they here they filter the also means take the air take the water and in this gills ए जो तुम देखा जाउची ए जो सेप्टम अछि सेप्टम रे ही तांकर गिल्स लेमिला अछि. लेमिला माने एमती है कि थिबो एमती है कि थिबो. ओके, so this actually here the reason where the same final structure like in cutaneous respiration what you see cell गोटे सिंगल लेयर थिबो मॉइस्ट है कि थिबो हाईली वास्कुलराइज है कि थिबो से गोटे ये रे गोटे पूरा माने सबु सेल गोटे ये है कि थिबो माने गोटे माने लाइन है कि थिबो जब तुम देखि थिबो भी खाइ थिबो जदी माछ को खाइ दो गिल्स देखि थिबो केमदी थाए सेथरे गोटे लेयर है कि थाए पाखरे. तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑल द योर गिल्स लेमिला. सो लेमिला रे ही सबु एमती है कि थाए आ लेमिला थ्रो ही सबु रेस्पिरेशन मोर गैस एक्सचेंज हुए. ओके, सो हियर एंड दिस इज कॉल्ड एज द टोटल ब्रांकियल पाउच माने एटा पूरा पाउच रे आसी जीवो. ओके, पाउच स्लिट्स एंड सेप्टम and this is supported by the gill arc. Okay, so this is the structure in the in our bony fishes. Okay, then coming to the bony fishes. Bony fishes here the example of Labiorohita or the rohu fish has been shown. You can see here they have a operculum. Okay, the cut edge of the operculum. Here you see the operculum को बाहर करके देखा है and this here you see gill rackers जोटा कि support करची. Okay, and these are the gills. Here you see the gills. Okay, these are the gills and gill chamber. So gills होची गोटे gill chamber भितरे आउ तो you can see now here the gill rackers केमती है कि होची here gill rackers. okay, and एठी gill arc होची जोटा कि gills को support करूची आउ एठी तो मैं देखि परिबो
efferent brachial artery पूरा सेठी जाइछि afferent brachial artery अछि gill filaments in section एठी तमे gill filament तमे देखि पारे एटा गोटे गोटे 1 2 3 4 देखि पारिबो blood capillaries in gill filament माने एई गोटे गोटे जगह को जो vertical lining देखा जाउछि से होउछि माने गोटे गोटे गिल्स अछि एटा गोटे 2 3 4 5 एमति हेकि अछि आ गोटे गिल्स रे ब्लड कैपिलरीज सर्कुलेशन हेछि आ सेठी ही सब exchange हुए. Okay, so that is the structure. Here you can also see here the gill records and blood supply in the lamella of the gill. एठी देखि पारिबो gill lamella एटा गोटे गोटे 1 2 जो थिला एटा गोटे 1 2 3 ए आर्टरी एमति हेकि जाइछि आ एठी एपटको efferent branchial artery आ एपटको तमरो efferent माने opposite side रे जाइछि आ gill lamella अछि मझिरे आ एठी blood capillaries जाइछि आ एठी ही exchange हुए. Okay, so this is the respiratory in bony fishes. Now lastly, the pulmonary respiration in case of the higher vertebrates, like we can see in case of frogs and like Protopterus, that is the Protopterus is lung fishes. Okay, and Necturus is a salamander, Seren is another salamander, Spinodon is a reptile. Okay, chameleon is a reptile, frog, and Natrix is a type of it's a snake. Okay, and turtle. So you see variety of the lungs. So in land animals, the respiration, the pulmonary respiration, the final one here we discussed about here. The up to here we discussing about the branchial respiration. In the pulmonary respiration, the pulmonary respiration is done through the lungs, and lungs is basically seen in case of land animals, and land animals have different types of adaptation and different type of structures and characteristics which support their life and for their particular habitat. So and particular mode of life, that's how they have been specialized. Okay, so these are the different types of pulmonary different types of lungs. You can see here, you can see Protopterus. This is the lung fishes. So here you see alveolus or the circulation throughout the cell and pneumatic pulmonary artery, you can see, and this is elongated one. Okay, but in case of Necturus like salamander, you can see here smooth internal lining, longer lungs, one of the is longer one and this one the smaller one. And here also you see one is the another salamander, you see one lung is longer and another is shorter. Okay, in Spinodon what is there? Lungs in simple internal alveoli is there, no like in us very complicated or very branching system on alveolus are there, but in Spinodon, that is the one of the lizard like animal, this type of lungs are seen. Here you see chameleon. Chameleon has a very interesting type of lungs which is माने गोटे माने सबू झुली की गोटे एक्सटेंडेड लंबे है कि झुलीला भले सबू अच्छी, तो तांकर लंग्स भी एमती लंबे है कि झुली है कि थाए. ओके, एठी तमे देखि पारिबो फ्रॉग रो गोटे इंटरेस्टिंग अछि कि फ्रॉग रो तांकर आमर जेमती अछि एल्वियोलस, तांकर सेमती एल्वियोलस पूरा क्लियरली नहीं, बट अच्छी छोट छोट अच्छी, बट दैट इज नॉट लाइक अस माने छोट छोट पूरा स्पेस है कि पूरा क्लियरली अच्छी, सेमती तांकर नाही, सेटा गोटे मझी मझे सेंट्रल कैविटी भी रही जाइछि. एंड दैट इज दिस इंसर माने जो लाइनिंग रु भितर को जो जाइछि माने जेमती हमरो ल्यूमेन रे जेमती लाइनिंग थाए, इंटरनल लाइनिंग थाए, सेमती तांकर भी ए नेटवर्क ऑफ सेप्टा जो एटा लाइनिंग रु भितर को जाइछि, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेबेक्यूली. एंड सेटा को से ट्रेबेक्यूली जोगी हुई से माने गोटे गोटे चैम्बर टाइप रो क्रिएट हो जाए, दैट इज अ टाइप ऑफ sac like of alveoli. Okay, and also you find some central cavity in the lungs. Now next is the Natrix. This is the snake, and in generally it has been seen in case of snakes or the legless reptiles. One of the lung is rudimentary, the left lung is not is totally absent or rudimentary, and the right one is functional. In case of chameleon or in case of turtle, you have spongy wall of in section and internal septa enclosing alveoli. माने तांकर structure देखो एठू अलगा अछि, ठीक है. Okay, lastly here you can see like salamander रे एमती अछि, then frogs रे, then here in case of reptiles, here in case of rabbit,
in case of the birds. Okay. And another thing is book lung. Book lung is seen in case of scorpions, in case of spiders. This a special type of lungs which is seen in case of spiders and scorpions. Okay, here you see where is the book lung. This is the the upper part, this is abdominal part. In the abdominal part you see the book lung. Book lung गोटे बही खाता भाया हेकी जमती थाए सेमती हेकी थाए से एयर फ्लो हुए और सेठी ही रेस्पिरेशन हुए. ओके. लास्टली यू सी द बर्ड मानकर केमती थाए. बर्ड मानकर लंग्स पूरा एमती दुईटा अच्छी आउ तार पुणी अलग अलग माने एयर सेक्स हेकी थाए विच एक्चुअली एंटर्स टू द different parts माने different ताकू आउ स्पेस दिए आउ ताकू भी हेल्प करे. सो यू सी different types of modification कहीं ना एमती रहिले ताकू फ्लाइट एडाप्टेशन एटा वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्लाइट एडाप्टेशन जोटा कि ताकू हेल्प करे उड़िया पाई आउ एयर तार वेट टा कम रखिबा सो दैट इट कैन फ्लाई. द बर्ड्स हैव दिस टाइप ऑफ थिंग. नाउ यू सी दिस इज द human lungs where the right one have 3 lobes and left one is having the 2 lobes. But in case of rabbit, there are 4 lobes found in the right lungs. Okay, and mammals generally have 2 lobes mucoeli generally, but you can also see some differences like whales, elephant, pterodactyls and sirenians. They do not have lobed. Man tangro lungs re lobes mane 1, 2, 3 एमती lobes किछि न थाए. आ monotremes and rats मानकर भी जदि थिबो खाली गोटे राइट वाला ही लंग्स लोब हेकी थाए आउ न थाए. So these are the some of the features, some of the structures, some of the modifications of the respiratory organs and lungs especially here. So with this we conclude this chapter. Okay, thank you for being with us. Thank you.